Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this video lecture, I'm going to discuss molecular luminescence and the chemiluminescence topic. Okay. So before actually started with this particular topic from the analytical chemistry, first of all, you should know that which are the content I'm going to cover in this video lecture. So these are the content. Throughout this content, you can definitely understand this topic clearly and properly. So let us first start with the introduction part of the chemiluminescence. So in this particular slide, we talk about the what is a chemiluminescence means, what is the definition of it, okay, and it's an example. Then later on we talk about the various types of the luminescence under which we briefly discuss the chemiluminescence part. Then next, chemiluminescence reagent that we are going to be discussed in deep. Then later on, how does this chemiluminescence happens and what are the required things, which is very important point of view your chemiluminescence emission. And then lastly, what are the factors that is going to affect the chemiluminescence, and finally the application. So actually, when we talk about the application part, so these actually chemiluminescence compound is most important application having in the pharmaceutical industry and in the forensic chemistry. So whenever you can find out the any object under the forensic, is there any crime scene, and if you wanted to identify the hide blood. Okay, so in that condition, we can actually use most of the time the chemiluminescence organic compound, so that that hide blood stain you can easily identify it with the help of the luminal compound. So luminal, it is actually one kind of the most famous example under this chemiluminescence. Apart from that, these kind of the examples or the compounds, chemiluminescence kind of the compound, you can actually use as a marker or as a stainer in the any organic chemical reaction. From that, actually you can easily identify the progress of the any chemical reaction. And apart from that, if you can see in this particular slide on the corner of this actually slide on the right hand side, so these are the actually one of the example of the what your chemiluminescent reaction, that is the fireflies. Okay, so these actually chemiluminescence is it actually nothing but whenever you heard this word, so the first thing which is coming into your mind, that is it is a one kind of the soft and the glowing light. So the ones you know about the light, so what is actually meaning of the light, that is the really most important part. So that's now you can discuss into the next slide, that is the introduction of the chemiluminescence. So now before started with this actually introduction of the part that what is the chemiluminescence definition of it, the most important thing you should understand the surrounding nature, because nature is ultimately very amazing, and that we have to saw the number of light emitting process in our surrounding that is going to be occurring in nature, and fireflies will be the one of the most example of that. So the luminescence student, it is actually a very common term that is going to use to describe the kind of event which is happening with respect to a light emission, but it is not due to the high temperature. तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि whenever we talk about the any luminescence, it is not with respect to any temperature phenomena, it is totally independent on that. तो इसके लिए इस luminescence को हम लोग कोल्ड लाइट भी यहाँ पे बोलते, मीन्स विदाउट टेम्परेचर यू कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर ग्लो, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है स्टूडेंट ल्यूमिनेसेंस. बट इफ यू कैन सी दिस ल्यूमिनेसेंस वर्ड, सो द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड is just ended with this essence word. So what is the beauty of this essence word, that first of all you need to understand. So the a very famous Latin word essentia, okay, and that essentia is the exactly meaning of the essence, and this word basically related to the essence. अब essence का मतलब यहाँ पे what is the actually it indicates, so this is the actually origin of this phenomena, that here you can indicate or we can say that describe the changes in physical, chemical, and the biological process. So whenever these terms comes under the luminescence, here you can indicate the changes in the physical, chemical, as well as biological process. And this is how this luminescence word comes into the picture. So later on, after this, the general term luminescence, we can call it as an umbrella term for all the actually emission light of the process which do not involve the any temperature effect, that is without obtaining or the generating heat. So when we not discuss about anything about the temperature, and without that, whenever you get any kind of the light,
that particular event is generally known as the luminescence. So now the light may be result of maybe any kind of the chemical or the biochemical reaction. Maybe it's a one kind of the radiation, or we can say the activity of your subatomic particle हो सकता है, या फिर it is actually one kind of the stress which appear on the crystal. So this is what the actually process is. And now the example of these actually luminescence include the so many things that you can see now. This is the one of the picture. So this is the actually light you can see. This is the actually luminescence में it is a soft and the glowing light you can see. और इस particular emission of light को ही यहाँ पर हम लोग बोलते हैं student luminescence. Now you can see, as earlier I said, that luminescence it is a umbrella term for all the emission of light. ठीक है, तो हमारे कितने अब emission of light है. So here in this slide you can talk about the various types of the luminescence. अब luminescence का मतलब यहाँ पे कौन से types है. So in that category the first example is student the fluorescence. Now discuss about the fluorescence and phosphorus. These terms you already learned under the optical spectroscopy topic. So when we talk about the atomic spectroscopy particularly, in that topic with respect to Jablonski diagram, we will learn in detail that what is the fluorescence and the phosphorus. So the rest of the time we are just forget about over here this term, because in this actually video lecture we only focus on the chemiluminescence. So this is the one more other topics. Then second one, third one is the photoluminescence. Then nextly sonoluminescence, crystalloluminescence, thermoluminescence, electroluminescence, chemiluminescence and the bioluminescence. So these are the actually various types of the luminescence. Based on their mode of the excitation, they are going to be different from each other. Okay, but in this video lecture we mostly talk about over here the chemiluminescence means what. So whenever we discuss the chemiluminescence, it is actually emission of light. What? Emission of light due to reaction of chemical. So whenever we talk about the any reaction of the chemicals and we generating the actually light, that particular topic is known as what? Your chemiluminescence. So in the same way, when we describe certain process, okay, when we describe certain kind of the mode of excitation, depending on that you can just define all these luminescence type. So if you can see the properly, all these types having ended the essence. ठीक है, तो ये इसेंस का ही मतलब होता है इन द लैटिन वर्ड इसेंशिया, मतलब दैट डिस्क्राइब द चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस. सो दैट वी हैव टू सी नाउ इन डिटेल. So now let us start with our today's topic, that is the chemiluminescence. So in the introduction, that what is the chemiluminescence? So as earlier mentioned that the chemiluminescence it is the generation of light due to any chemical reaction. तो ये यहाँ पे जो है most important word है, that it is actually generate the light because of the reaction of chemicals. So further, the what is the next criteria over here? The phenomenon of the chemiluminescence is exactly similar to that of the what your fluorescence, but only except the mode of excitation. So first thing that you should clearly understand, then what is the difference between the chemiluminescence and the what your fluorescence stuff. So there is actually very fine difference. You can observe in these both the term कि fluorescence क्या होता है हमारा and आपका chemiluminescence क्या है. तो generally in fluorescence your electron, so whatever the target material you have, the electron is kicked up to a higher energy state by the addition of photon. Okay, whereas in chemiluminescence the electron is in a high energy state due to its a creation of an unstable intermediate in the chemical reaction. So this is the actually basic difference between the what your chemiluminescence and the what your fluorescence. बस इतना ही डिफरेंस है. मतलब फ्लोरेसेंस में जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट लेवल पे जंप करता है, सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ द रेडिएशन, तो उससे जो एनर्जी मिलता है उसकी वजह से. बट यहाँ पर केमिलुमिनेसेंस में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट से जब हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दे एब्जॉर्ब द एनर्जी विच इज what gather or collected from the any kind of the chemical reaction. So this is the actually basic difference between the fluorescence and the chemiluminescence. So that's why in this particular topic we have to see now the chemical reaction and behind that mechanism क्या है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे chemiluminescence जो ये लाइट है ये जनरेट हो रही है, ये हमें यहाँ पे देखना है. So ये जो chemical reaction है, that chemical reaction is generally known as exothermic oxidation reaction. So the once you heard the word
exothermic oxidation reaction. So here the two different words I'm going to be use exothermic. Now you people are know that exothermic मतलब वो chemical reaction जहाँ पर हम लोग highest मतलब energy जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा maximum हमें energy lose होती है during the chemical reaction, तो उस chemical reaction को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग exothermic. उसके opposite है आपका endothermic. Likewise oxidation जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन जो moiety उसको involve करते हैं, addition of oxygen is nothing but what student, oxidation reaction. So it is actually the combination of the two different reaction. Okay, and that is actually giving you the glow, that is actually giving you soft light, which is nothing but what your chemiluminescence process. So that's why it is very important to understand which those are compound, which we can call it as a chemiluminescence reagent. So now let us start with this particular topic. From this picture you can clearly understand. Now you can see here we have the two electronic energy level over here. This is the actually what your excited state, whereas this is what your student ground state. Okay, now you can understand over here, once your molecule is going to be targeted by the energy, so that energy in the form of maybe electromagnetic wave, heat, friction, electric field, or the chemical reaction. Okay, but here you need to clearly understand the chemiluminescence. But if you are going to be applying out of this any topic, तो यहाँ पर हम लोग उसे बोलेंगे luminescence. But in the case of the chemiluminescence, this energy should be in terms of the chemical reaction. So यहाँ पे electromagnetic wave, हीट, फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पे हमें क्या कंसीडर करना है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बात करें किसके बारे में, रिगार्डिंग द chemiluminescence. So now in the form of chemical reaction, the whatever energy is gathered or collected, that energy actually strike onto the electron, and then that electron absorb that particular energy and goes to the higher energy level over here in the excited state, and again coming back to the ground energy level. So during that particular time they actually emit the light, and that light actually known as what student here, the chemiluminescence. Okay, तो यही प्रोसेस अब हम लोग आगे लेके जाएंगे, that how this now light is going to be appear. So to understand that in detail, first of all you need to understand some of the basic fundamental principles. In that, first of all you need to understand the phenomenon of the chemiluminescence is the exactly same as that of the fluorescence. So I already mentioned that, but except the mode of excitation, that also I explained earlier. So now the difference between the CL and the bioluminescence is only is that chemical reaction मतलब यहाँ पे purely we talk about the chemical reaction, and in the bioluminescence here we talk about the biochemical reaction. This is the only difference between that. So that is lies इन द ओरिजिन ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और यहाँ पे स्टूडेंट आपका होगा बायोकेमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग जनरल केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. सो सपोज दिस इज योर जनरल केमिकल रिएक्शन वेयर योर ए कंपाउंड जो है इट इज गोइंग टू बी इंटरैक्ट विद द बी कंपाउंड, and then you will get certain kind of the product with the emission of light, and that is actually chemiluminescence, simple chemical reaction. So now to get this particular product, now these A and B first of all has to be reacted, and when they are going to be interact with each other, reacting with each other, they first of all go through the some of the intermediate, and then that intermediate further convert into the product along with the light. तो ये ओवरऑल यहाँ पे केमिकल रिएक्शन. सो एज अ जनरल रूल इफ आई कैन से only few exothermic reactions can generate the required energy, because यहाँ पे ऐसे नहीं कि सारे के सारे जो भी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहां पे उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होने वाली है, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन एंड एवरी टारगेट मॉलिक्यूल हैज देयर ओन एनर्जी क्राइटेरिया. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू नीड टू डिसाइड इट. सो दिस इज वेरी common and the general rule is that only few exothermic reaction can generate the required energy. Required energy मतलब जो भी हमें एनर्जी की जरूरत है to jumping from ground state to the higher excited state level, तो वो कुछ ही हमारे ऐसे exothermic reaction है जो कि वो reaction को provide करने वाले. So therefore the most of the chemiluminescence reaction used to potential oxidant like oxygen, hydrogen peroxide or the similar chemical reagent, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट chemiluminescence reagent. So now to carry out these all this criteria we have to use now here the chemiluminescence reagent. तो यहाँ पे most of the chemical reaction you can find out the oxygen, hydrogen peroxide, but apart from that you can also use the some another compound also over here, like some of the another compound means over here if I'm talking about the peroxynitride. ठीक है, तो वो भी कंपाउंड यहाँ पर आप एज अ केमिलुमिनेसेंस रिएजेंट जो है एज उसे कंसीडर कर सकते हो.
peroxynitride species, that which actually which has also been reported to facilitate the luminescence sometime. Okay. And apart from that, now the next principle under this, that in any chemical luminescence reaction at least have two reagent A and B. तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला दो reagent होना जरूरी है, and when they reacting with each other you will get your product C. So now then some fraction of it must be present in an electronically excited state that may further subsequently relax to the ground state by emitting a photon. और तभी जाके आपका यहाँ पे Cl जो रिएक्शन है, मतलब केमिलुमिनेसेंस जो रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा. सो एट द एंड ऑफ द डे अब तक आपको यहाँ पे पता चला होगा दैट केमिलुमिनेसेंस मतलब वो काइंड ऑफ लाइट, और इट इज अ वन काइंड ऑफ द इवेंट जहाँ पे आप लाइट ऑफ एमिशन के बारे में बात करें, जब आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी यूज करके आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाएगा, एंड देन व्हेन दे कमिंग बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट दे emit the photon, and this overall process is known as what, student? Chemiluminescence. Now just we go on further. After the now introduction, the next part is which are those mechanism. तो वो chemical reaction में कौन से mechanism को follow करके हमें वो chemical reaction कंप्लीट होने वाला है या फिर हमें केमिलुमिनेसेंस मिलने वाला है. सो नाउ दीज आर द हैविंग द टू बेसिक मैकेनिज्म. वी हैव एक्चुअली बेसिकली टू रूट. In that your first route should be, first of all, your any chemiluminescent precursor which are actually target material has to be reacted with the oxidant. अब जैसे कि मैंने oxidant में बोला कि आप ऑक्सीजन ले सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो, so that has to be combined with these, and cofactor will be the any third reagent if you need to add, and the catalyst according to the your chemical reaction to enhance the chemical reaction or speed up the chemical reaction. So when they all are reacting together, you will get here the one of the intermediate, or sometimes you will get directly the final product, but the most of the time your final product goes through the intermediate part. तो जैसे ही यहाँ पे हमें intermediate मिला, ठीक है, दैट इंटरमीडिएट अगेन फर्दर गो इनटू द नेक्स्ट लेवल, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सैनिटाइज, और वी कैन से द एनर्जी ट्रांसफर केमिलुमिनेसेंस. सो आफ्टर दिस वी विल गेट ओवर हियर द फाइनल प्रोडक्ट अलोंग विद द एमिशन ऑफ लाइट, एंड फर्दर दे आर गोइंग टू बी स्प्लिट अप इनटू द व्हाट ईयर इंडिविजुअल. तो जो भी आपने यहाँ पे प्रीकर्सर डाला था दैट इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड अलोंग विद द एमिशन ऑफ लाइट. सो दिस इज व्हाट योर स्टूडेंट सेकंड रूट. Now first route will be when these all the components are reacting together, you will get directly your final product and the emission of the light. So this is how you can describe these actually mechanism chemiluminescence reaction in two ways. So most of the time we just go with the first actually chemical reaction. So now let us start through the example. Now looking at the some of the example, you can understand the clearly how these chemiluminescence are going to be happening. So the very famous example, so the more specifically chemiluminescence can be described as the electromagnetic emission, and that is arises from the organic compound which are actually yields the energy rich product, that is a luminescent. Because of the what will happen, the molecule is either rigid or they are the very small, and that is unable to quickly dissipate the energy of the exothermic reaction internally. So that is why, so the example if I'm going to be considered in this criteria, so the very famous example, student, is the what here, the luminol. So chemiluminescence generally is actually distinguished from the more efficient bioluminescence by the fact of their controlling the reaction. तो उनका क्या chemical reaction है, that we need to see. So now over here, particularly when we talk about the any study of the chemiluminescence, so the most famous example वो है यहाँ पे आपका luminol. तो luminol का मतलब यहाँ पे होता है, स्टूडेंट, we talk about the 5-amino 2,3 dihydrophthalazine 1,4 diol. तो इस कंपाउंड को पर्टिकुलरली यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट luminol. It is actually one of the earliest cases of the Cl, where now this luminol is an aminophthalic hydrazine and that is able to exist in several tautomeric forms. अब जो हमारा ये luminol है उसके बहुत सारे derivatives है, that is also giving you the chemiluminescence. So the other जो derivatives है of the luminol, like your isoluminol, aminobutyl, ethyl naphthyl, hydrazide, and finally diazoluminol. These are actually again the some of the another example of these what luminol. तो ये सारे luminols के derivative. So what are the actual structure of the luminol? So now you can see from the example number 1, example number 2, and example number 3. So these all are the luminol and it's a derivatives, and generally all these derivatives are oxidized in alkaline media. What I'm saying, generally all these compounds are oxidized in alkaline media and then to form excited aminophthalate, and then which is again
releases the energy as a terms of light. Okay, and suppose it is not in the basic medium, if it is in a protic media, then a catalyst and the source of oxygen are going to be required over here. This is the criteria. So now in depth we can understand this example of the chemiluminescence, that how this chemical reaction is going to gives you the luminescence. तो यहाँ पे हमें जनरली लाइट कैसे मिलता है? सो दिस इज द एक्चुअली योर स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाट स्टूडेंट हियर, ल्यूमिनल. ल्यूमिनल का मतलब है 5 amino. So this is the actually your target material. So this is the 5 4 3 2 1. So this is what your position of the fifth. तो इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट जनरली 5 amino, again I'm repeating, 2 3 dihydroxythalazine 1 4 dione. ठीक है. अब जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक यूज किया अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम, एंड आफ्टर फॉलो दैट बेसिक मीडियम हियर यू ऐड द ऑक्सीडेंट मतलब केमिलुमिनेसेंस जो रिएजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको आपने ऐड किया, एंड देन दिस कंपाउंड हैज टू टर्न्स इनटू दिस काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल. जहाँ पे आपका रिंग जो क्लोज था, तो यहाँ पे वो रिंग ओपनिंग हो रहा है, एंड देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द लाइट, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं केमिलुमिनेसेंस. बट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्टली मैकेनिज्म बिहाइंड इट, हाउ दीज आर गोइंग टू बी हैपनिंग, how the chemiluminescence can happen. तो ये समझने के लिए ये है basic reaction. So either you just draw the structure. If you don't remember the structure, so you can simply write down the luminol along with the 2 moles of the NaOH and the 1 mole of the oxygen. When they interacting with each other, you will get here the elimination of the nitrogen. Na2APA means amino phthalate, what your azide जो है उसका derivatives and the emission of the light. Now in depth you can understand the mechanism that how it gives the glow. Now in the mechanism you can clearly understand the by pushing arrow mechanism you can use, and you can understand the procedure properly. So now you can see here, the first of all, as soon as you are going to be add the 1 mole of the base into this particular lumina, तो base का यहाँ पे स्टूडेंट रोल होता है abstraction of the proton. अब यहाँ पे 1 more क्राइटेरिया कि प्रोटॉन यहाँ से कहाँ से एक्ट होगा, तो यहाँ पे सिंपल रोड है एसिड बेस. सॉफ्ट जो अगर एसिड है तो वो सॉफ्ट पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, हार्ड एसिड है तो हार्ड पे अटैक करेगा. अगर यहाँ पे सॉफ्ट बेस है तो सॉफ्ट पोजीशन वहां पे अटैक करेगा, अगर वो हार्ड बेस है तो वो हार्ड पोजीशन पे अटैक करेगा, या फिर जो एसिडिक जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर उसका अटैक होगा. सिंपल. तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखोगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन, दिस इज द एक्चुअली हाइड्रोजन दैट इज गोइंग टू बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस. तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 मोल क्या किया, इसमें बेस ऐड कर दिया. सो नाउ दिस बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन. सो इमीडिएटली द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन, okay, so these bond will be break down and migrate on the head of the here in between this actually bond. अब सेकेंड मोल है, फिर से हम लोगों ने बेस इसमें ऐड कर दिया, तो ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा एंड दिस बॉन्ड विल बी माइग्रेट ओवर हियर. सो दिस इज हाउ नाउ यू विल गेट आफ्टर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस व्हाट हियर प्रोटॉन, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सो एरो का मतलब यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट होता है दिस विल बी एक्ट्स एज ऑलवेज प्लस साइड एंड दिस विल बी द नेगेटिव साइड. मतलब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को लेते हो और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स को लैंड अप करते हो. सो दैट्स व्हाई हियर दे जनरेटिंग द नेगेटिव साइन. सो वंस दे आर हियर गेटिंग द नेगेटिव, अब ये कीटो फॉर्म हुआ, अब यहाँ पे होगा आपका टोटोमेरिज्म स्टार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म. अब ये नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव साइन, इमीडिएटली दे माइग्रेट ओवर हियर एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो दिस पाई बॉन्ड विल गेट माइग्रेट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस इनॉल. तो जिस प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं tautomerization. So through the tautomerization you can get this keto get converted into the enol form. So this is the actually derivative of the enol. So here you will get the oxygen and here you will get the double bond. So once you will get, so this is the actually first you can reacted your overall molecule base के साथ in alkaline medium. तो जैसे ही बेस से आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा ना, हियर यू कैन फर्दर ऐड व्हाट आई एम सेइंग द ऑक्सीडेंट. अब ऑक्सीडेंट में यहाँ पे आप आइदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ले सकते हो या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो. इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ पे आप रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करोगे. नाउ हियर दिस इज द नॉन रेडिकल मैकेनिज्म. सो आई एम गोइंग टू टेक द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. Now these actually double bond between these oxygen get migrated towards it here, the carbon and double bond जो है यहाँ पे अटैक होगा. So at the same time these double bond get migrate over here and these double bond get migrate over here. ठीक है. So what exactly happen after this? So you will get this is the final product and these actually double bond, मतलब ये जो oxygen that is going to be incorporated in this particular ring. So immediately now this ring will be completely strained
ऑक्सीजन की वजह से पूरा रिंग स्ट्रेन हो जाएगा. So now to release that particular stress, immediately this actually negative sign which is on the head of the oxygen, that is going to get migrate over here. Then these actually bond between the carbon and oxygen migrate over here, and immediately this actually particular bond is going to be migrate over, मतलब that is going to be coming outside. तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो यहाँ से completely eliminate होगा, whereas again this bond will get migrate over here. So now you can see over here. So this is after this you will get over here. तो ये आपका cyclic peroxide था, so that is going to be completely break down over here. So this is how here now student you will get this actually ring opening reaction throughout this concerted mechanism, and the nitrogen gets eliminated. तो जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्टूडेंट 3 amino phthalate in an excited state. तो हमारा जो excited state में जब इलेक्ट्रॉन जंप होता है इन द लिमिनल केस, so this is actually your excited state product. ये हमें यहाँ पे excited state पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जो हमारा कंपाउंड होगा, तो ये हमारा वहां पे कंपाउंड होगा. So that's why I'm going to show here the asterisk sign, मतलब वो excited state में present है. So when they are going to be present on the excited state, they are highly unstable. So they wanted to again coming back to the lower energy state, मतलब ground state पे आना है. So now at this particular time what will happen, immediately these excited state molecule are going to be coming to the ground state and they are going to be emitted the light. तो यहाँ से देखो ये वाला जो मार्क था वो यहाँ से चला जाएगा and you will get here the light emission, and this is how you will get here the soft light or the glow of the light in the chemiluminescence. I hope so this reaction should be completely understood you. Now after looking at this mechanism of the luminescence, this is the actually theoretical diagram that how they are going to be jumping. So suppose now you are a compound that has to be luminol or anything, that is going to be first of all oxidized. तो जैसे यहाँ पे oxidation reaction होगा, whether it should be reacted with the oxidant like oxygen or hydrogen peroxide, जहाँ से आपका nitrogen eliminate हो जाएगा. So here A is going to be oxidized and nitrogen is evolved leaving a vibrationally excited triplet state, जहां से वो eliminate होगा. So this is the your reaction A plus O2. Here you will get the intermediate जो अडक्ट मैंने आपको बताया था combination. तो यहाँ से वो directly जैसे उसका jumping होगा, they are going to be present over here in the lowest triplet set and nitrogen either going to be eliminated. तो यहाँ से eliminate हो जाएगा. Then further in the next step they are going to be what, settle down. So lowest जो होगा excited singlet set, वहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, conversion है, and from that particular singlet set again they are going to be coming back to the lower energy level, मतलब ground set. So here vibrational energy is lost, collision, etc. Now to form a less vibrationally excited state from which the 3-APA star emits a photon called as the what, your student, chemiluminescence. Okay, so this is what your overall mechanism behind it. And now further you can understand after this particular kind of the Jablonski diagram that the luminol जो है what is exactly look like. So luminol का formula यहाँ पे student होता है C8H7N3O2. It is a one kind of the chemical that exhibits the chemiluminescence with the blue glow. So this is a blue color of the light you will get. So this is the soft blue glow light you will get for the luminol, and this actually luminol most of the time it is a really very important application in the terms of forensic. ओके तो जो हाइट जो ब्लड होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फोरेंसिक में ल्यूमिनॉल को यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ स्टेनर. The next example है chemiluminescence में after the luminol 1,2-dioxetane. Now these are the actually another important group of the chemiluminescent compounds student. Now these compounds are actually what will happen, oxidatively cleave and thermally in a concerted fashion to yield two carbonyl moieties, one of which are going to be excited. So ये जो particular example है यहाँ पे हम लोग actually दो different mechanism को follow करते. So the mechanism of this cleavage has been described as a chemically initiated electron exchange chemiluminescence, जिसे हम लोग in short में बोलते हैं CIEEL. And apart from that जो second जो यहाँ पे mechanism है उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं diradical mechanism. Now you can see which those are mechanism. So this is your first path of the mechanism and this is your second path of the mechanism. तो जो हमारा यहाँ पे first mechanism है स्टूडेंट, इसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं डायरेडिकल मैकेनिज्म, बिकॉज यहाँ पर हम लोग रेडिकल को जनरेट करते हैं. सो ये आपका यहाँ पे डायरेडिकल मैकेनिज्म है. वेयर जो सेकंड जो एग्जांपल है दिस इज व्हाट योर CIEEL मैकेनिज्म है, मतलब केमिकली इनिशिएटेड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज केमिलुमिनेसेंस रिएक्शन है. सो जनरली व्हाट विल हैपन,
द राइट हेलिकन जो मैकेनिज्म है, जो फर्स्ट मैकेनिज्म पाती है यहाँ पे, मोस्ट ऑफन एक्चुअली जनरेट द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो भी मॉलिक्यूल जनरेट होगा वो होगा triplet excited state. But whereas if I'm going to look into the second example, तो generally वहाँ पे as a resulting we are going to be generating the singlet state compound, मतलब S1. So this is how in the two different mechanism path you will get the different excited state compound. So this is how you can decide it, the which mechanism path is going to be very helpful according to your application point of view. But apart from that, reportedly if I am going to permits and triggers the reaction in organic solvent only by the addition of base, मतलब in the alkaline medium, then what will happen? Similarly, like for example siloxane substitute अगर हम लोगों ने यहाँ पे consider किया, okay, siloxane substituent, then what will happen? They are going to be facilitated triggering the reaction by fluoride ions. ओके सिंपल। तो ये मैंने जैसे कि बोला, ये कौन सा पाथ यहाँ पे फॉलो करना है, इट टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर व्हाट नीड ऑफ एप्लीकेशन। एंड देन थर्ड एग्जांपल है हमारा इन द कैटेगरी ऑफ द chemiluminescence इज द स्टूडेंट व्हाट, acridinium compounds. Now again the acridinium compounds, it is a form of the third group of your chemiluminescence compound, and these are actually student commonly acridinium ester, okay, in which your intramolecular displacement of the alcohol derivatives generates the four-member dioxetinone ring, which upon opening releases the energy. And this is how you will get your the chemiluminescence. तो यहाँ पे actually acridinium compound में we follow the different path of the mechanism. तो ये सबसे most probable mechanism है under the acridinium compound, but there is again another alternative route. So this is your alternative route 1 and this is what your alternative route 2. So now you can see what are the changes in this particular chemical reaction. So these are the acridinium compound. Now here if you are going to be looking at the bottom of this particular functional group, so now actually this particular group is finally converted into this particular 4-member ring. So how this is going to be converted into the 4-member ring? So that is the beauty of this particular chemical reaction. So here first of all initially your base and the oxidizing जो भी हमारा oxidant है, they are going to be reacting and here you will get the peroxide kind of the product जो हमारा initial reaction का मोटिव है, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा. अगेन द सेकंड मोल ऑफ द बेस, इट इज गोइंग टू बी इंटरैक्टेड व्हिच abstract this particular proton from this moiety and here you will get the oxyanion and then here they are going to be attacking to this actually because जो हमारा जो most important जो living group है, तो यहाँ से X निकल जाएगा and this oxyanion will be attack over here and this is how you will get over here student the 4-member ring and again this 4-member ring again converting into this final product. तो यहाँ पे जो है अगेन रिंग ओपनिंग होगा एंड CO2 ग्रुप जो है वो यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा. सो विद द एलिमिनेशन ऑफ CO2 यू विल गेट दिस इज द एक्साइटेड व्हाट कंपाउंड, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे केमिल्यूमिनेशन जो है ग्लो जो है वो कंपाउंड में मिलता है. सेकेंड अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे क्या है कि सिमिलर कंपाउंड जो भी हमें यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिला था, तो यहाँ तक प्रोसेस सिमिलर है, तो यही इंटरमीडिएट हमें क्या करना है, आगे यूज करना है. नाउ इंस्टेड ऑफ द OH माइनस यहाँ पे हम लोगों ने अगर वाटर डाल दिया इसमें, तो ये हुआ आपका प्रोटिक मीडियम में. सो हियर वी फॉलो द अल्कलाइन मीडियम, मतलब ये बेसिक मीडियम था. अगर हम लोग अल्कलाइन मीडियम के बात करें या फिर न्यूट्रल, तो वाटर अगर हम लोगों ने ऐड किया देन व्हाट विल द प्रोटोनेशन विल अकर. तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, सो द कार्बोनिल जो ग्रुप है एट दैट प्लेस द प्रोटोनेशन विल अकर across the double bond. So here you will get this kind of the product. तो जैसे ये प्रोटॉन होगा again I am going to add the base, again proton abstraction and then here internally reaction start होगा consider. तो ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और यहाँ से OH माइनस जो एलिमिनेटली यहाँ से चला जाएगा. तो फाइनली यहाँ पे OH माइनस निकलेगा एंड C डबल बॉन्ड O माइनस अलॉन्ग विद द X. तो ये दो ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट होंगे और आपको ये यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा. तो इन द सेकेंड टर्म में क्या होगा, again this actually water once they are going to be reacted with, तो यहाँ पे जो हमारा लिविंग जो ग्रुप है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से चला जाएगा एंड देन हियर यू विल गेट द ऑक्सीजन आयन and again the X minus will be eliminated. So this oxygen ion again migrate over here, this migrate over here, OH यहाँ से निकल जाएगा फाइनली आपको. तो यहाँ पे बेसिकली जो एलिमिनेशन होगा वो होगा OH minus CO2. अब यहाँ पे इट इज नॉट एक्चुअली इजी, मतलब मैं जितना इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बता रही कि यहाँ से अटैक होगा, यहाँ से निकलेगा. दिस ऑल द एवरीथिंग पॉसिबल मैकेनिज्म whether it's alternative route 1, alternative route 2, this all the mechanism is depending upon your all the electrophilic and the nucleophilic attack. Now to understand overall what is exactly mechanism, you should clearly understand the
acid base term, which is the nucleophile, which is the your electrophile, what is actually pushing arrow mechanism, वो यहाँ पे आपको अगर properly है आपका organic chemistry, then you can definitely understand this mechanism. But we are not here discuss the most of the time the organic chemistry concept, because we have to focus only on to the what is chemiluminescence part. So this is what you need to understand, only the three example, that is a luminol, 1,2-dioxetane and acridinium. So this is how, with respect to this actually reaction mechanism, I followed this reaction mechanism, you can generate the chemiluminescence. Now after understanding the reaction mechanism, next part यहाँ पे स्टूडेंट के what are the requirement, मतलब कौन सी चीजें यहाँ पे जरूरी है to get the chemiluminescence emission. तो ये emission of जो लाइट है ये होने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी चीजों की जरूरत है. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटेंसिटी है, आपका क्वांटम यील्ड है, क्वांटम एफिशिएंसी है, देन हमारा एनर्जी टर्म है. तो वो सारे जो टर्म्स है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो एंथैल्पी टर्म यहाँ पे होगा, एंट्रोपी यहाँ पे होगी. तो सारे टर्म हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट हमारा नंबर 1 ये है, नाउ टू प्रोड्यूस एक्चुअली सफिशिएंट एनर्जी to form electronically excited state, the reaction must be exothermic. मतलब अगर आपको यहाँ पे एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन चाहिए तो आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होना जरूरी है. अगर वो सफिशिएंट एनर्जी है तो ये आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, हायर एक्साइटेड स्टेट लेवल पे जाके वो जंप करेगा. तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है. तो अब ये समझने के लिए, टू प्रिडिक्ट वेदर द योर रिएक्शन शुड बी सीयर, मतलब केमिलुमिनेसेंस है या नहीं, यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड द फ्री एनर्जी टर्म, मतलब डेल्टा जी, that is going to you need to understand. तो ये very famous thermodynamic mathematical expression है, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. So I am assigning the number 1. So by using now this expression, you can clearly understand this is the actually requirement of the chemiluminescence emission. अब यहाँ पे दो टर्म है. फ्री एनर्जी अगर हमें पता है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इक्वल टू 1 है, तो हम लोग इमीडिएटली बता सकते हैं whether this reaction should be exothermic, endothermic or odd. तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो 3 है. फर्स्ट डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी, डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर, डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी. Now how this enthalpy and entropy are affected and so how these are going to be required for this chemiluminescence reaction, तो उसकी requirement हम लोग देखते हैं. So now let us first start with the your first term. Now for generating the electronically excited state product, the actual source of energy is what your enthalpy. तो enthalpy actually most important है वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आपका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा. सो नाउ टू स्टार्ट द एनी केमिकल रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. बराबर, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट करना है, सो यू रिक्वायर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली डेजिग्नेटेड एज डेल्टा एच ए. डेल्टा एच का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी जो कि आपके रिएक्शन के लिए जरूरी है. नाउ टू प्रोड्यूस द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, द अवेलेबल एनर्जी फिर क्या होगी आपकी डेल्टा ई एक्स. अब डेल्टा ई एक्स का मतलब है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के लिए जो हमारी प्रोड्यूस जो भी हमारी अवेलेबल है जो एनर्जी है वो है यहाँ पे डेल्टा ई एक्स, एंड दैट इज गोइंग टू मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन दी योर रिएक्शन एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी. तो इन दोनों का अगर हम लोगों ने डिफरेंस निकाला तो जो भी एनर्जी यहाँ पे हमें मिलेगी दैट इज योर प्रोड्यूस, मतलब दैट इज योर अवेलेबल एनर्जी, एंड दैट अवेलेबल एनर्जी इज designated as a delta E. In the subscript you have to write down the EX for the available energy. अब हमारे पास यहाँ पे दो एनर्जी, एक्टिवेशन भी एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी. इफ आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट, अगर ये दोनों यहाँ से हमें मिल जाए तो हमें रिएक्शन एनर्जी के बारे में यहाँ पे इमीडिएटली पता चल जाएगा. सो आउट ऑफ द टू कंपोनेंट, इफ यू नो ऑल दिस टू कंपोनेंट देन डेफिनेटली विल गेट द रिएक्शन एनर्जी. सो इफ द डिफरेंस, looking it carefully and just listen carefully, if these difference is equal to or greater than this particular value, then the energy required for generating the excited state delta EX, then the CL process will be produced. अगर ये criteria इक्वल टू और ग्रेटर अगर होगा तो डेफिनेटली वहां पे स्टूडेंट आपका क्या होगा, केमिलुमिनेसेंस प्रोसेस जो भी है हैज टू बी देयर. तो ये है क्राइटेरिया यहाँ पे. देन एनर्जी अवेलेबल इज इक्वल टू डेल्टा एच ए, मतलब केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस डेल्टा एच आर का मतलब है योर रिएक्शन एनर्जी. अगर इनका मुझे डिफरेंस मिल गया तो दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, टोटल जो भी होगा आपका प्रोड्यूस एक्साइटेड स्टेट लेवल जो अवेलेबल जो एनर्जी होगा उससे वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए. तभी जाके आपका यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, केमिलुमिनेसेंस रिएक्शन होगा. सो बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि वहां पे केमिलुमिनेसेंस है या नहीं. सो दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट. और फर्स्ट रिक्वायरमेंट में एंथैल्पी के बाद जो सेकंड टर्म है वो है एंट्रोपी.
Now in many chemiluminescence reaction, what will happen, this entropic change is going to be appear very small, क्योंकि entropy is nothing but what you have student है, disorderness of the system. तो यहाँ पे कोई disorderness तो है नहीं, it is a order chemical reaction, क्योंकि one step में ही reaction होता है. So always consider any time, कोई भी आप जब chemiluminescence reaction के बारे में बात करते हो, तो that should be carried out in one single step. तो one single step में ही होना चाहिए. So in that case they are very orderized. तो यहाँ पे entropy change बहुत small होता है. So that what will happen, the Gibbs free energy है delta G जो होगा and delta जो H है are very similar then in the case of their magnitude and the energetic requirement. So that can be established in terms of what kilocal per mole. ये यूनिट यूज करके हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं. Now in that sense, the most of the chemiluminescence are going to be occur when your reaction must be sufficiently exothermic such that these are the equation. तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए एच सी अपॉन वेवलेंथ एक्स, मतलब लैम्डा ई एक्स. सो दीज आर द वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एच सी. ओके 2.86 into 10⁴. So यहाँ पे जो आपका लैम्डा ई एक्स है इज नथिंग बट दी लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट विच इज इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर फॉर एक्साइटेशन ऑफ द ल्यूमिनेसेंट स्पीसीज. ठीक है. सो इसे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी एंट्रोपी की कितनी रिक्वायरमेंट है. सो लुकिंग एट द एंट्रोपी टर्म एंड लुकिंग एट द योर एंथैल्पी टर्म, यू कैन इजीली डिफाइन द फ्री एनर्जी एंड यू कैन आइडेंटिफाई वेदर रिएक्शन इज गोइंग टू बी chemiluminescence or not. So the reaction pathway must be favorable to channel the energy for the formation of electronically excited state, and that is chemical energy must not be lost as a heat. तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हो तो वहां पे आपकी कोई भी एनर्जी दैट शुड नॉट बी लॉस एज ए हीट करके उसका लॉस नहीं होना चाहिए. अगर इट इज गोइंग टू बी लॉस अगर होती है तो आपको वहां पे आगे जाके एमिशन ऑफ लाइट नहीं मिलने वाला है अच्छे से. सो फॉर दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट वाया वाइब्रेशन एंड द रोटेशनल एनर्जी वेज द रिएक्शन विल नॉट बी chemiluminescent. तो अगर आपकी वहां पे एनर्जी एज अ लॉस हो रही है हीट के हिसाब से तो वहां पे आपको फिर chemiluminescence नहीं मिला. और अगर वहां पे डिफाइन कर रहे हो दैट एनर्जी इज लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट, मतलब वो आइदर वाइब्रेशन या फिर रोटेशनल एनर्जी में उसका क्या हो रहा है, थोड़ा ना कोई उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और वहां पे उसकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है. सो दैट इज व्हाट इट इंडिकेट्स. और ये सारी चीजें आपको जाबलस की डायग्राम से क्लियरली पता चलती है. अब थर्ड रिक्वायरमेंट है यहाँ पे स्टूडेंट आफ्टर दिस द मोस्ट फेवरेबल डीएक्टिवेशन प्रोसेस. अब डीएक्टिवेशन प्रोसेस आपको पता है कि जब आप हायर एनर्जी लेवल पे होते हो तो वहां पे आपका कोलिजनल डीएक्टिवेशन होता है. सो द मोस्ट फेवरेबल जो डीएक्टिवेशन प्रोसेस है ऑफ द एक्साइटेड जो प्रोडक्ट है उसका मस्ट बी फोटोन एमिशन. अगर फोटोन एमिशन हो रहा है तो आपको रिएक्शन पता चल जाएगा. तो फोटोन एमिशन इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटिव नॉन रेडिएटिव प्रोसेस. तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब यहाँ पे सिंपल हुआ द एमिशन ऑफ लाइट. ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल जैसे गया वैसे के वैसे नीचे आया तो उसे हम लोग बोलते हैं अदर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस दैट अपियर इन द लो प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डीएक्टिवेशन प्रोसेस. सो यहाँ पे दैट इज गोइंग टू अफेक्ट नाउ योर इंटेंसिटी डेटा. So now over here, the intensity of that produce emission depends on the efficiency of your generating molecules in the excited state of the chemiluminescence reaction. Now here you can see now intensity term. Now that particular actually represented by the quantum yield means quantum efficiency and the rate of the reaction or the intensity of your chemiluminescence compound which is arising from the chemiluminescent reaction, and that is going to be described by the given equation. तो यहाँ पे आपको intensity of chemiluminescence reaction पता चल जाएगा. This is the efficiency of the chemiluminescence reaction and these are the rate of the chemiluminescence reaction, मतलब dA upon dt. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. दैट इज अ chemiluminescence emission intensity means ICL. This actually value indicates over here student for quantum yield, मतलब कितना है प्रोडक्ट का, और dA upon dt जो नेगेटिव जो ये टर्म है, तो ये नेगेटिव जो टर्म है, ये ओवरऑल जो टर्म है dA upon dt नेगेटिव, ये यहाँ पे इंडिकेट करता है रेट एट विच योर chemiluminescence precursor is going to completely consume in the chemical reaction. Okay, so higher values of the quantum yield. तो अगर मान लीजिए ये जो टर्म है इसका अगर हायर वैल्यू है, सो दिस हायर वैल्यू जनरली इंडिकेट्स और यूजुअली एसोसिएटेड विद द बायोल्यूमिनेशन रिएक्शन. तो ये अगर उसकी वैल्यू हाई तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की तरफ उसको इशारा करती है. सो द एफिशिएंसी जो है ऑफ दिस chemiluminescence reaction that is again going to affect the data. So now the efficiency of the chemiluminescence depends on how efficiently excited state are generated from the molecular reaction and how efficiently the excited state are going to be
luminescence, और वो आपको पता चलता है by using these actually particularly mathematical expression where these five CL is the excitation efficiency. These 5 EXC stand for over here what student? Excitation term है. Okay, और यहाँ पे है second लूम. अब यहाँ पे ये एक्साइटेशन रिलेटेड और ये है यहाँ पे आपकी व्हाट स्टूडेंट? ल्यूमिनेसेंस व्हाट एफिशिएंसी. सो LUM luminescence efficiency, this is your excitation efficiency, and this is what your chemiluminescence efficiency. So this is by subtracting this chemiluminescence efficiency and the what your excitation efficiency, you will easily get the chemiluminescence data. Okay, so both the actually generally influence these intensity efficiency data are going to be influenced by a variety of reaction conditions, such as like whether it's a solvents, what kind of the solvent you employ, what is the concentration of your chemical reaction, then what is the pH value of the chemical reaction, and what are the purity of your reagent. There are so many terms actually that is going to be affected this efficiency. So the intensity of that luminescence, okay, that can be generally used as the basis for the determination of any species whose actually concentration influence the rate of the efficiency of the chemiluminescent reaction. तो ये यहाँ पे आपको properly याद रखना है. So now to obtain the precise measurement, the chemiluminescence reaction should be initiated in a controlled and reproducible manner largely, and because of that the emission intensity varies with time as the reactants are going to be consumed. तो ये यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर्ली चैनलाइज हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग, द chemiluminescence analysis are reported to have several advantages like in terms of good sensitivity, wide linear dynamic range, low detection limits down to the femto or attomole range, or the requirement of the simple instrumentation. So these are the most important part of this requirement of the chemiluminescence emission. So now after understanding all the requirement of the chemiluminescence reaction, the last and the most important term is the which are the factor that is going to be affected your chemiluminescence reaction. So definitely organic chemical reaction है, मतलब नेचर आपके सॉल्वेंट का हो सकता है, नेचर आपका सबस्ट्रेट का होगा, मतलब chemiluminescent प्रीकर्सर का होगा, देन सॉल्वेंट एंड प्रीकर्सर जो इंटरेक्शन है वो है, नेचर ऑफ द ऑक्सीडेंट होगा. सो नाउ जस्ट लुक इनटू इट दैट which are the factor that affecting the chemiluminescence reaction. So in that your first should be chemical structure of the chemiluminescence precursor. So as earlier I mentioned that is very important. Second, nature of the other substrate which are going to be reacted with the chemiluminescence precursor. तो वो जो second substrate है उसका nature that is going to be affecting again chemiluminescence pathway. तो वो mechanism को वहाँ पे definitely affect करेगा. Third है chemiluminescence precursor and effect of their structure on the chemiluminescence. So their interaction means, and then concentration of the fluorescent compound on the Cl. तो अगर कोई आप fluorescent material वहाँ पे ले रहे तो कोई अगर functional group है, which generally actually acts as a fluorophore, which actually gives the glow to your organic compound. So their concentration again affect the chemiluminescence. Then next, effect of the catalyst that you can add into the chemical reaction. And finally, effect of the flow rate. So these are the actually so many terms that is going to be affected your chemiluminescence reaction. So I hope so student actually with this particular point you can clearly understood that what is a chemiluminescence reaction means, how the reactions are going to be happening, how these glow are going to be generated by follow the so many mechanism, by follow the so many alternative path, and which factor and which things are going to be required to carry out the reaction. So now I sum up overall this topic in few words. First of all, chemiluminescence, it is a one kind of the soft and glowing light. Generally we can call it as a cold light. तो ये विदाउट टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर फिनोमेना है, जो कि जनरली बिलो 723 केल्विन जो टेम्परेचर होता है उसके नीचे जो रिएक्शन होगा उसे ये रिएक्शन chemiluminescence बोला जाता है. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे केमिकल जो भी रिएक्शन होगा वो केमिकल रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना जरूरी है, जिसमें फर्स्ट जो एक जो प्रोडक्ट होगा सबसे फिक्स होगा chemiluminescence प्रीकर्सर, और सेकेंड आपको इसके लिए यूज करना है कोई भी ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडेंट में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो, या फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज कर सकते हो, या फिर पेरोक्सीनाइट्राइड काइंड ऑफ द स्पीसीज यू कैन यूज एज अ ऑक्सीडेंट, एंड यू कैन कैरी आउट द रिएक्शन. यू कैन कैरी आउट द रिएक्शन इन बोथ द मीडियम, बेसिक मीडियम एज वेल एज इन द
proton medium, and you will get that particular glow. Second required criteria chemiluminescence के लिए that your molecule has to be jump from ground state to the highly excited state level पे. तो वहां पे जाने के लिए आपको वहां पे sufficient energy required है, and that sufficient energy required data you can gather from the what your thermodynamic properties, like by looking at the Gibbs free energy delta G, looking at the enthalpy term delta H, and looking at the delta S entropy term. And later on you need to clearly understand the what is the intensity of the chemiluminescence, and to know the intensity of the chemiluminescence you know the quantum yield. अगर quantum yield ज्यादा से ज्यादा value provide कर रहा है, then that is going to turn into the biochemical reaction bioluminescence. And then second, once you know the quantum yield, from that actually quantum yield you can easily define the quantum efficiency of the chemiluminescence with the help of the emission. मतलब जो excitation जो efficiency है वो वैल्यू आप ले करके इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो केमिलुमिनेसेंस एफिशिएंसी. एंड देन लेटर ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट कौन कौन से फैक्टर है जो कि केमिलुमिनेसेंस को अफेक्ट करते हो, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू on the your slide. So I hope so with these all the point you can understand overall topic. But still student, if you have any doubt regarding this topic, so you can definitely ask me any question. I definitely resolve your all the problem. So student, once again thank you so much watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. So once again student, thanks a lot. Like a Hellcat.